That is called procrastination, the act of delaying a task. Maximum number of people who procrastinate are perfectionists. Every time you lie on the bed and like यार आज नहीं हो, because वो आप एक rhythm में हो, your mind is giving you a signal, you're working, चलो एक खत्म हुआ दूसरा खत्म हुआ, so you're on that mode of energy work. लेकिन स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, पेरेंट्स होते हैं with the डंडा कि चलो करो, हमारे ऊपर कोई है नहीं ना with the डंडा. हाय एवरीवन, मैं हूँ शमाइज़ा साकिब, योर होस्ट फॉर द डे। आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन पे। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? वी इन आवर एवरीडे लाइफ्स गो थ्रू दिस। तो चलिए आज जानते हैं सकीना जी से और सीखते हैं ऑल अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। सकीना, ऑल अबाउट यू। Hi Shamaiza, first of Hi. all thank you so much for having me here. And yes, so I am an NLP coach. NLP is neuro linguistic programming, which deals with the subconscious mind. It's about what we do, how we react to our day-to-day situations, because हमारे there's a mental map, and because of our learnings हम लोग एक particular way में react करते हैं हर चीज़ के लिए. So that's NLP. I also do one-on-one counselings, and I conduct workshops on different life skills like parenting, law of attraction, employee well-being, so on and so forth. ओके, सो प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत सारे लोगों को आज भी ये वर्ड, ये टर्म शायद उनके लिए नया होगा, उन्होंने पहली बार सुना होगा। सो प्रोक्रेस्टिनेशन को हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे? Okay, before I break it down into Hindi, हम लोग I'll just in simple English में बता दूँ. बहुत ही fancy word है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है how do you pronounce the word. So it's procrastination. Am I pronouncing it right? Yes, you are. So it means the act of delaying a task. मतलब आप जो करना चाहते हो या आपको जो करना ज़रूरी है, you are pushing it away. ओके, आप डिले कर रहे हो, कोई भी टास्क को डिले कर रहे हो. एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दे दूं कि वेरी सिंपल, आपको एक कबर्ड क्लीन करना है, वार्डरोब आपका क्लीन करना है, एंड इट इज ऑलवेज लाइक अ टुमारो कि कल सुबह, कल, एंड वो कल कभी आता नहीं है. आई थिंक हम सब ये चीजें डेली लाइफ में करते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं बाद में करेंगे. यस, सो दिस एग्जैक्टली इज प्रोक्रेस्टिनेशन. यस, द एक्ट ऑफ डिलेइंग. ओके, कुछ भी चीज डिले कंटिन्यूसली करना, दैट वो जो कल कभी आता नहीं है उसको, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन. द एक्ट ऑफ डिलेइंग अ टास्क इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन. एंड आई थिंक इसीलिए वो कोट हमने सुना था बचपन में, कल करे सो आज, आज करे सो अब. सो सकीना, हाउ डज mental health and procrastination relate to each other? या how does it affect your mental health? ओके, सो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है एक मोर देन अ टाइम रिलेटेड थिंग, वो एक माइंड रिलेटेड थिंग है. इट्स लाइक एन इमोशनल थिंग. सो स्लोली एज अ पर्सन कीप्स डिलेइंग इट, उसका एक हैबिट बन जाता है वो. सो इट कैन लीड टू पुअर मेंटल हेल्थ. सो every person who is delaying a task is not having many mental issues. लेकिन अगर वो आपका हैबिट बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हर चीज़ को डिले करना, तो आपका वो लाइफस्टाइल बन जाता है, एंड देन यू स्टार्ट डिलेइंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड इट स्टार्ट्स टू अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ. सो येस, प्रोक्रेस्टिनेशन एक फीडबैक लूप है टुवर्ड्स योर मेंटल हेल्थ, एंड इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ इफ नॉट targeted in the right way. Causes of procrastination mainly? See, causes, when I say about when I talk about emotional, it's more of an emotional thing, Because I think it is sometimes purposely done, I mean intentionally, and sometimes I guess it is, yeah, there are underlying issues. So again, it's not a time management thing, it is an emotion management thing. सो हम क्यों करते हैं प्रोक्रेस्टिनेट? बेसिक रीजंस है. एक तो है कि हम बोर्ड है, वी आर बोर्ड, कोई चीज़ करना है, हम बोर्ड है, हम नहीं करना है अभी. सेकेंड इज हमको एंग्जाइटी है. ओके, देयर इज एंग्जाइटी. either you are bored of it, or either you're anxious about it. you're not able to. Then there is one very important, and you will not believe, but this is true, that maximum number of people who procrastinate are perfectionists. So it has got something to do with perfectionism. Why I say this and why it has been proven is that
अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक प्रेजेंटेशन बनाना है, ओके, कोई भी चीज़ के लिए, अगर लेकिन आप एक परफेक्शनिस्ट हो, सो यू विल से दैट आज मैं मूड में नहीं हूँ, कल मैं एनर्जेटिक होगी तब मैं बनाऊंगी. हाँ, बिकॉज दैट कैन अफेक्ट द प्रेजेंटेशन. यस, क्योंकि मुझे परफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए वो स्टार्ट ही नहीं होता. यू डोंट स्टार्ट बिकॉज यू आर अ परफेक्शनिस्ट. सो परफेक्शनिज्म is a very like the core thing for which we delay our tasks. So there's anxiety, there's boredom, there's perfectionism, and then one more thing which is stress. Because हम stress में होते हैं, हम नहीं करते. अरे यार आज मेरा मूड नहीं है, I'm stressed, I'm tired, तो मैं नहीं करूँगी. So these, अगर बहुत सारी reasons है, but अगर हम break down करें तो these are the 4 major reasons why we procrastinate. And again I'll say that अगर एक वन ऑफ चीज़ है, वन ऑफ डे कि हाँ आज आई एम फीलिंग टायर्ड, सो आज मैं ये नहीं कर पाऊँगी, इट इज़ फाइन. बट दैट टुमारो नेवर, वो कल जो कभी आता नहीं है कि कल 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 कल, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम एंड देन इट नीड्स टू बी टारगेटेड एंड वी नीड टू काइंड ऑफ एनालाइज इट एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कोर रीजन. इनिशियली मेरे साथ भी हो रहा था, बट आई डिडंट नो एग्जैक्टली कि दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन. बिफोर दिस एपिसोड मैंने भी इस बारे में स्टडी किया पहले, राइट, कि बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन आई शुड नो व्हाट द टर्म इज, सो दैट यू नो आई कैन पुट अप द क्वेश्चंस फॉर यू. बट मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना टू डू बनाना. ओके, which is very important. Yes, I took a diary and I started noting down my to do कि मुझे कल क्या क्या टास्क करने हैं. और मैंने ये रूटीन, आज भी ये मेरा रूटीन है कि मैं सोने से पहले अगर छोटा भी काम है, किसी को कुछ डिलीवर भी करना है, मे बी कोई PR आया है, वो PR शूट करके मुझे रील अपलोड करनी है, तो वो भी आई राइट इट डाउन कि ये मेरा आज का टू डू है, और वो हो जाने के बाद आई कट इट ऑफ. which is a very good thing. The cutting off is a very good thing, because वो जब आप कट ऑफ करते हो, एक आपको एक माइंड में एक सिग्नल आता है कि यस, कि ये काम मैंने आज कर लिया, नाउ दीज आर माय पेंडिंग वर्क्स. अच्छा, और आज मैंने आउट ऑफ 5 टू डू मेरे अगर 4 हुए हैं, मे बी 5th नहीं हो पाया है, सो वो अगेन वापस सेकेंड में मेरे टू डू में चला जाता है. हाँ, सो ये इसने मुझे बहुत हेल्प किया है डील करने में कि नहीं, आज मैं ये काम नहीं करूँगी, या ये काम नहीं हो रहा है मुझसे, तो क्यों नहीं हो रहा है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, या वॉट एवर द रीजन. यस. सो यस, मेकिंग अ लिस्ट, प्रायोरिटाइजिंग, हम जो प्रायोरिटाइज करना आपके डे को, आपके टास्क को, इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट हेल्प्स अ लॉट विद प्रोक्रेस्टिनेशन. ओके, सो आई एम गोइंग राइट. यस, एब्सोल्युटली. सो वुड यू रेकमेंड एवरीबडी कि आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? एब्सोल्युटली. Like a 10 on 10, yes, because chunking out or prioritizing, as I said, making a list, to-do list, okay, of what to do, and sticking to that list is very important. List तो बहुत लोग बना ले, okay, that's okay, but sticking to it, and as you said कि आप cancel out जो करते हो, तो आपका एक when you are cancelling, your brain might be giving you a message, indirect, subconscious में message आता होगा कि yes, I've done it. So it is a self achievement, एक sense of achievement आता है आपके अंदर when you cancel out a task. I have done it. Yeah. So that kind of reinforces. And that gives me a relief also. Oh my God, yes. आज मेरा इतना सारा काम था, वो खत्म हो गया. Yes, because the thing is कि our brain releases certain chemicals, right? We know endorphins and oxytocin, बहुत सारे, we'll not get into that, but it releases a chemical which is a sense of achievement every time you accomplish something. It could be a small task, it could be a big task. So एक sense of achievement जब आता है, so you are more motivated to do it the next day. Apart from to do, writing the to do list, जैसे मैं लिखती हूँ, हो सकता है कोई लिखता हो, कोई ना लिखता हो, right? So what tips would you give कि वो procrastination से बचे? Okay, so the most important thing is, as I said, to understand why we procrastinate. Certain reasons that I told you, but when we talk about the why, so there is a fear of कि ये ठीक से नहीं होगा. Okay, one is a fear. I'll just first talk about that, and then we'll come to how can we deal with it. Okay. Second is clarity. कि why do I need to do it? The why is not clear. So we need to have clarity. Okay, a lot of people don't have the clarity. Third is motivation. उनके पास motivation नहीं है कि what after this, मैं क्यों कर रही हूँ ये, like after this what am I going to get? So वो motivation, lack of motivation है.
And as I talked about perfectionism, okay, so they don't do it because they want it perfect. I'll do it, तो मैं perfect करूँगी, नहीं तो I'll not do it at all. Now these are the few of the reasons, okay, why people procrastinate. When you realize, आप जब बैठ के सोचोगे, and you know all of this comes with a lot of inner work. बहुत ही हम जब खुद से बातें करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, we get these answers. So आप जो बास्केट में आपका रीजन जाएगा, you know whichever what 4 reasons I talked about, जिस बास्केट के अंदर आपका रीजन जाएगा, okay, now let's talk about a simple example like reading. Lot of people want to develop reading का habit कि मुझे I want to start reading a book, लेकिन वो लोग कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते because Like me. Yes. Why? Because you feel first of all आपको clarity नहीं है कि कौन सी book, where to start. People don't know where to start. So which book, what type, आपको पता ही नहीं कि आपका genre क्या है, what type of books you want. Also my reason, book पे आए तो I Yeah. would like to share कि during my school days there was a library on the top floor. हाँ. तो हमारे पास रीज़न था कि लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ से सर्च करेंगे and we'll pick up a book. Now there's no library nearby. We have to travel along. तो वो भी एक रीज़न है कि I don't know where to start, how to start. Yes. So the how to start is one important thing. Okay, so book का एक अगर example ले, so a lot of people don't know how to start, like you mentioned, okay? Yes. Even if they know how, even if there was a library or crossword आपके घर के बाजू में भी होगा, लेकिन आप नहीं जाओगे क्योंकि आपको knowledge नहीं है कि अभी क्या चल रहा है, मुझे क्या read करना चाहिए, मुझे fiction read करना है, non fiction read करना है, अगर non और fiction अभी read मैंने करना है तो देखा कौन है सा? आजकल everybody wants to read business, Yeah. how to get rich, जो normally मैं देखती हूँ, how to get rich, how to do business, how to deal with mental stress, mental Self-help health. books. Self-help books. Yes, and which is a very good thing. Which is a very good thing. So if you know what you want, वो एक आ जाता है clarity, okay? So it's about reading the book. Okay, चलो अगर आपके पास book भी है घर पे, for example you have the book, you have that interest in the book, but वो अब the reason most of the people give is that I don't get the time. मेरे पास time, बच्चे, काम, घर, social life, time नहीं है. So excuses आ जाते हैं ये चीज़ से उसमें. हमेशा बचने के लिए I always tell everybody, you have to first love yourself, then you can always deal with the family issues, always Yes. deal with the children wala issue, always deal with all the home issues, but first get some time out from your schedule for yourself. Yeah, Always absolutely. tell everybody. Yes, yes. So true. So हमारे पास we feel कि we don't have the time to read it. अगर अपने हम you know a lot of women are home, or even forget women, even men, they have time, weekends है, they will still not pick up the book because they feel यार it's such a 200 pages का, अगर 200-300 का pages का book है, when will I complete it? So वो anxiety of कि कब खत्म होगा, उससे अच्छा start ही नहीं करते. So they don't start. So in this case how you deal with it is chunk it down. उसको कोई भी टास्क है, कबर्ड वार्डरोब क्लीनिंग है, बुक रीडिंग है, कुछ भी है, आपको चंक डाउन करना है. कैसे चंक डाउन करना है, कैसे लाइक माइक्रो उसको छोटे छोटे बिट्स में कट डाउन करना है. इफ़ यू हैव अ बुक 200 पेजेस का बुक है, आप एक मेंटल नोट बना दो कि मुझे मिनिमम इन अ डे बिफोर आई स्लीप 24 आवर्स में 5 पेजेस रीड. सो यू हैव टू हैव अ टारगेट, मुझे 5 पेजेस रीड करने हैं कम वॉट में, रात को 12 बजे, 2 बजे, शाम को 5 बजे, टाइम इज योर्स. यू हैव टू हैव दैट नंबर. यू डोंट हैव टू से कि हाँ आई विल रीड. नो, हाउ मच विल यू रीड? व्हेन यू स्टार्ट विथ 5 पेजेस अ डे, सो हाउ मेनी डेज विल यू कंप्लीट इट? राइट, सो यू विल कंप्लीट इट. It may take long, but you have started. So that's At least started. it will give you that start and the focused attention to do it. Yes, I वो guess. rolling start हो जाएगा. And once it starts rolling, then habits develop. As we all know, 21 days में lifestyle बन जाता है एक particular habit. So it becomes your lifestyle. So I think chunking it down, having a target for yourself. अगर wardrobe cleaning का अगर हम बोले कि okay हमको लगता है यार पूरा wardrobe नहीं होगा आज. So the best way to do it, मत करो. Don't do the whole wardrobe. आज एक ड्रॉवर कर लो, कल एक दूसरा सेक्शन कर लो. Or so chunk it down. So by the end of the week or by the end of 3 or 4 days, you will have it. Well, begin is half done kind of a thing. Yes, do it now. You have to go on saying it to yourself. Do it now. Do it now. Do it now. So every time you lie on the bed and like यार आज नहीं होगा, you know, I'm like
just let it नॉर्मली हम go. बेड पे जाने के बाद ही प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. always in a Always. comfort zone. The Yes, moment you are in a yes. comfort zone, you will procrastinate. Yes. You will very rarely procrastinate, and I'm saying this. I did it today itself. I was supposed to write down the questions before I go to sleep for Right, you okay. in a paper so that I don't have to hold the phone like this behind the pad. Huh. But then as soon as I lied down, I said, oh my God, I'm so tired. Sleeping is more important right now. Questions तो मैं phone से देख के भी पढ़ लूँगी. And then I procrastinated. And then I went to sleep. Yes. So that was a delay. That was a delay. And trust me when I say this, whenever you are on your toes, whenever you're working, and कोई भी आप चेक कर लेना किसी के भी लाइफस्टाइल में, जब आप बिजी हो आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, बिकॉज वो आप एक रिदम में हो. योर माइंड इज गिविंग यू सिग्नल, you're working, चलो एक खत्म हुआ दूसरा खत्म हुआ, सो यू आर ऑन दैट mode of energy, work, so you will not procrastinate. You will only procrastinate when you are in your comfort zone. You Right. can procrastinate when you're busy out of being busy. Out of having an option. Like अगर मेरे पास phone का option नहीं होता, then मेरे पास और कोई option नहीं. I had to write down the questions, Yes. even if I'm tired. But then I had another option. And that's why I procrastinated. Yes. Yeah, that is, but then that will not, I will not term that as procrastination. Okay. That is something because you were genuinely tired, because you have been busy. So, and you have your stuff ready. If you are not prepared the questions at all, अगर किया ही नहीं है, हाँ. तो then हम उसको procrastination बोलते हैं. Right. But आपने आपका product ready है. Yes, it was Okay? ready. It Your was matter ready in is the phone. Yeah. Yes, so it is not termed as procrastination. It's just that how you choose to deliver it. You have taken a different option, an easy option, and I Easy think option. that is fine. But not starting it at all is procrastination. Again, जब भी हमारा podcast होता है, before I sleep the other day, I always make sure कि कल जो भी guest है उनको मैं questions एक बार भेज दूँ, so that even they get the overnight time until they come the next day to prepare themselves. True. तो वो मेरे to do list में चला जाता है. And then no matter yesterday, as I said, I had a moza meet. Yes. I was literally badly tired yesterday. When I came back home, I had my legs swollen. Still, my mind gave me a reminder. You have to send the questions Yeah. for tomorrow. Yes. So then I was on the way in my car and I sent you the questions and I sent Geeta ma'am the questions for tomorrow. So without delay, and I kept them ready a day ago already. Yeah. No, so that's what I'm saying, that when So you are my on that. to-do has helped me in this. Yes, absolutely. But also one thing we need to, I think, understand, and I think it's very important, is that overworking yourself because you don't want to be a part of procrastination also is not good. So again, I said कि procrastination is a habit. If there's a one-off day कि आप genuinely थके हुए हो, or you're genuinely tied up, or you're genuinely इतना ज़्यादा drained कि आपके पास energy ही नहीं है कुछ करने का. So yes, you can take a break. So people mistake a break with a procrastination कि हाँ मैं तो break ले रही हूँ, so it's okay. No, break is something where you have actually worked out too much and you're taking a break. Procrastination is that tomorrow is never coming. That tomorrow at start is never coming. Do it now is never coming. That now always is tomorrow. So we have to understand the difference between the two and not get confused, because it could affect the other party in a bad way. Okay. So that break is important, as long as you know that it's a break. You know, that pause before the thing, So how would you distinguish procrastination into? So procrastination को हम good और bad में कैसे divide करेंगे? Okay. Good procrastination and bad procrastination. मेरे हिसाब से there's nothing as good procrastination. Okay. Procrastination is procrastination. There's nothing as good, and I'm not saying it is bad, लेकिन वो healthy है ही नहीं. Done majorly is bad. Yeah. So the thing is, जो हम good procrastination की शायद आप जो बात कर रहे हो, it's not about good procrastination. It's about a break. It's about a pause. It's about saying no to something because आपके पास वो energy नहीं है to do it, and genuinely energy नहीं है. So वो एक आप self reflection mode में चले जाते हो, या फिर आप एक
रिलैक्स मोड में चले जाते हो बिकॉज योर बॉडी इज आस्किंग फॉर इट. तो दैट इज़ नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. प्रोक्रेस्टिनेशन वो चीज़ है कि आप पुश करते हो, मैं आई एम गोइंग टू डू इट टुमारो, कल 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 कल, एंड वो कल कभी आता नहीं है. 6 महीने हो गए, एक साल हो गया, वो कल कभी आता नहीं है. सो वो एक प्रोक्रेस्टिनेशन है. आप एक दिन का ब्रेक लो या फिर एक कपल ऑफ आवर्स का ब्रेक लो या 2-3 दिन का ब्रेक लो, वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, वो सेल्फ हीलिंग है. जो एक पॉज इंसान को चाहिए ना वो हिट करने के एंड आई थिंक दैट्स ओके. दैट इज नीडेड. हम लोग जब बच्चों को भी हम स्कूल भेजते हैं, वो 1-2 दिन का उनको वीकेंड का छुट्टी मिलता है. व्हाई? दैट इज नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज अ ब्रेक. बिकॉज कंटिन्यूसली एक चीज़ करते जाओगे, माइंड एंड बॉडी थक जाता है ना. वी आर ह्यूमंस. तो वो एक ब्रेक लेना ज़रूरी है. सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज अ ब्रेक विद अ प्रोक्रेस्टिनेशन. वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आई थिंक चीज़ है. वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. All right. So, does time management help in procrastination? Yes, absolutely. जो मैंने बोला पहले कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट. वो एक इमोशनल चीज़ है. इट्स इमोशन मैनेजमेंट. हमको वी हैव टू ट्रेन द माइंड. इमोशंस को ट्रेन करना है. सो येस, टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज टाइम मैनेजमेंट आपके ब्रेन, आपके माइंड को ट्रेन करेगा कैसे आपके टाइम को हैंडल करना है. सो येस, देयर आर अ फ्यू टेक्निक्स. So, can NLP Yes. हेल्प करेगा? NLP टेक्निक्स यूज यस यस, NLP टेक्निक्स हेल्प करते हैं. बट उसके पहले एक टाइम मैनेजमेंट का एक क्लासिक टूल है, टेक्निक है, जो हम लोग यूजुअली कॉर्पोरेट्स में या फिर स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेन करते हैं इसके ऊपर. इट्स कॉल्ड, स्टूडेंट्स में ये ज्यादा देखा जाता है. Yes. प्रोक्रेस्टिनेट स्टूडेंट, नो, इट्स अक्रॉस everyone, okay. अक्रॉस एजेस. लेकिन स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, पेरेंट्स होते हैं विद द डंडा कि चलो करो. हमारे ऊपर कोई है नहीं ना विद द डंडा. दैट इज व्हाई इट्स अलाउड फॉर अस एंड इट्स नॉट अलाउड फॉर द किड्स. सो वैसा है. इट्स अ प्रेशर फॉर देम. यस. ओके, सो सकीना, बिफोर वी प्रोसीड, लास्ट एपिसोड जो हमने किया था NLP का, Yes. अबाउट चाइल्ड बिहेवियर एंड यस, एवरीथिंग, पेरेंटिंग. हाँ, उसके बाद डिड पीपल अप्रोच यू एंड डिड योर फैमिली वॉच दैट एपिसोड? Yes, absolutely. So it was, I think, a total hit. There's so many people, including my family and friends, who called me, and I got very good feedback. And I think what the things we discussed that day, they were so appropriate. I think it was like a everyday kind of a thing for people, and they could really relate to it. So yeah, I got very good reviews for that. Thank you so much. And you are doing a fab job by doing all of this. Like, Thank you so much. So Sakina, share time management tips with our audience, because that is the most difficult thing for all of us these days. yeah. Okay, so क्योंकि हमारे पास फोन पे बैठ के रील्स देखने का टाइम है और हमारे टास्क कंप्लीट करने का टाइम नहीं है. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, फोन इज लाइक अ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इसलिए. एंड वो एक एडिक्शन बन जाता है. वो स्क्रॉलिंग एक एडिक्शन बन जाता है. सो ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, एंड I feel I need to get out of this. I think we all, because we have been given a tool to do everything in our hand. And वो एक जगह, especially Instagram is one place where you can feel happy also. You can listen, like you can watch funny things also. You can, if you're heartbroken, एल्गोरिथम ऐसा है कि वो आपको हार्ट ब्रोकन स्टफ दिखाएगा. लिटरली आप डिमोटिवेटेड हो तो वो वाला, मतलब वट एवर योर मूड इज, इट कैचेज इट. एंड देन आई मीन 1-2 रील्स देख लो, फिर इंस्टाग्राम कीप्स थ्रोइंग सच वीडियोज एट यू, तो यू फील कनेक्टेड. You feel connected, you feel, oh okay, and then you keep watching it because you are in that mood already. So I think everybody goes through it, even I go through it. But again, training your mind is so important. I can't emphasize enough on how important it is to train your mind in order to not get indulged. आपको कोई भी चीज़ में ऐसे घुसना नहीं है to an extent कि आप पूरा you get lost. So एक important technique जो हम students को, corporate employees को, बच्चों को सिखाते हैं, is called the Pomodoro technique. A lot of people who already do a lot of time. Pomodoro. Yes. Sounds like Doraemon. It's POMODORO. Pomodoro technique. ज़्यादातर people use it in corporates. Now, the technique is the baseline ये है कि आपको कोई भी चीज़ करने के लिए you don't need ज़्यादा time.
ओके अटेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप जो भी करो, आपका अटेंशन अगर राइट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. सो हाउ दिस टेक्निक वर्क्स कि आप कुछ भी अगर स्टार्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल, गिव मी एन एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, लाइक let's talk about a college student example. Okay, if a student, college, school, whatever student wants to study, if they decide to study at say 12 o'clock in the afternoon, so from 12 to 25 minutes आप अपना फ़ोन, डिस्ट्रैक्शंस, कुछ भी है, आप बंद कर लोगे. सो वॉट यू गॉट टू डू, 12 o'clock अगर मैं बैठ रही हूँ मेरी बुक खोल के, सॉरी माई इंग्लिश, ओके, सो इफ़ आई ओपन माई बुक एट 12 o'clock, मेरा फ़ोन साइलेंट पे हो जाएगा, अवे, दूर. साइलेंट पे दूर होता है तब भी हमें फ़ोन की याद आती है, वी मिस आवर फोन. हाँ, तो हम ट्रेन कर रहे हैं अपने माइंड को. या फिर दूसरे रूम में रख दो, ओके, या फिर कीप इट फार अवे फ्रॉम यू. नाउ एक ग्रिप अपने आप पे यू हैव टू गेट, ओके, ड्यूरिंग दीज 25 minutes. सो 25 minutes आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि फॉर 25 minutes मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी करूँगी. ओके, 25 minutes, नॉट अ बिग थिंग यार. 25 minutes is not a big deal. सो 25 minutes के लिए नॉन स्टॉप विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, नो पानी, नो वॉशरूम, नो फोन, no mummy, no khana, no pina, nothing. Okay, you're going to sit on your chair with your book and study. Focused. Now, what psychology says is human brain का capacity to grasp anything. Attention span जो है 20-25 minutes ही होता है, उससे ज़्यादा लोग will start moving. कुछ भी आप कर लो, 20-25 minutes के बाद कोई इंसान यॉन कर लेगा, मूव करेगा, शिफ्ट करेगा, पानी, कुछ भी, वो एक ब्रेक चाहिए इंसान को. ओके, वो एक इट्स अ प्रूवन थिंग. सो हम क्या कर रहे हैं कि 25 minutes का ही आपको टाइम दे रहे हैं टू कंप्लीट योर स्टडी, ओके, वट एवर, हाउ मच एवर यू कैन, विदाउट डिस्ट्रैक्शन. नाउ यू विल कीप एन अलार्म ऑफ 25 minutes ऑन योर फोन. ओके, सो 12:25 का अलार्म आप अपने फ़ोन पे रखोगे. जब 12:25 को ये जब अलार्म बजेगा, आप अपना बुक क्लोज करोगे, आप उठोगे, अलार्म स्विच ऑफ करो, यू गेट अ 5-minute ब्रेक. So 12:25 to 12:30 you get a 5-minute break. Now ये ब्रेक में आपको जो करना है आप करो. आपको पानी पीना है, आपको वॉशरूम ब्रेक लेना है, आपको बाहर जाके एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, मम्मी से बात करनी है, कुछ भी करना है, द टाइम इज़ योर्स. आपको इंस्टाग्राम देखना है, मैसेज, जो भी करना है अंडर द सन, 5 minutes you have to yourself. Do what you want. But the deal is 12:30 you are back on your seat. So 5 minutes का break you got, you did 25 minutes का work, 5 minutes break you got, 12:30 को you will keep another alarm for another 25 minutes. That is from 12:30 to 12:55. Right. So another 25 minutes. So that those 5 minutes are like charging up yourself. Yes, you are taking a break. वो जो pause के बारे में हमने जो बात की, which is important even in small task. आप वापस फ़ोन रख दो दूर, you again are back on your seat to do the same thing. मतलब आप स्टडी कर रहे हो तो आप स्टडी, you will not switch the task. आप स्टडी तो स्टडी कर रहे हो, आप नहीं बोलोगे अभी मैं कुछ और करूँगा. No, you're going to continue to do the same task. Now another 25 minutes of uninterrupted आपका जो टास्क है आप करोगे वो uninterrupted. आप मम्मी पापा सबको बोल दो कि प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. 12:55 को अलार्म बजा, वापस 25 minutes के बाद आप उठे, अलार्म स्विच ऑफ किया, you get another 5 minutes. Another 5 minutes break. Okay, so you're going to repeat this cycle for 4 times. So इसके अंदर what you got, okay, you got 25, 25, 25, like 4 times. You have given 2 hours to yourself. उसके अंदर you got 20 minutes का break, because 5 minutes को लेके 20 minutes का आपको break मिल गया. आपने अनडिवाइडेड 125 सॉरी 25 into, हाँ, सो 100 minutes ऑफ अनडिवाइडेड फोकस्ड स्टडी मिला आपको. Yes. 20 minutes का ब्रेक मिल गया. अभी दैट क्वालिटी ऑफ आपने जो स्टडी किया है विल नॉट बी इवन क्लोज टू अगर आप पूरा दिन बैठ के एक ही चीज़ करते रहोगे. इट नॉट
बी कंपेयर टू दैट, क्योंकि ये ये फोकस्ड, अनडिवाइडेड, अनइंटरप्टेड स्टडी है ऑफ 100 मिनट्स. तो वो आपको जो ग्रास्प होगा विल बी नोवेयर इक्वल टू एक फुल डे का पढ़ाई ऑल्सो, एंड दिस इज द गारंटी. नाउ दिस इज 4 times you did. अगर आप 4th time you are doing it, तो instead of 5 minutes you take maybe a 20 minutes or a 30 minutes break. Okay. तो आपने फर्स्ट टाइम किया 12 to 12:30 का पूरा साइकिल हुआ, देन 12:30 to 1, 1 to 1:30, 1:30 to 2 o'clock को आप ले लो लंबा सा ब्रेक, 20 minutes का ले लो, हाफ एन आवर का ले लो, लंच ब्रेक ले लो. ओके, एंड देन यू स्टार्ट योर अगेन. So how many cycles you want to do depends upon the complexity of your task. कितना लेंदी है आपका टास्क जो है, आप वो हिसाब से, लेकिन मिनिमम ये साइकिल 4 बार करना है आपको, मतलब 2 घंटे मिलेंगे आपको. So focusing on your tasks. Yes. That's how concentrating on it you can manage time. You can manage it, and the concentration आपको जो ये टेक्निक में मिल रहा है, इट्स बिकॉज क्या होता है कि अगर आप बैठते हो, अगर ये टेक्निक नहीं कर रहे हो आप, अगर बैठे हो आप एंड अगर आप स्टडी करना है, आपका फ़ोन है, आप सोच रहे हो अभी खाने में क्या होगा, मुझे प्यास लगी है, वॉशरूम जाना है, और बार बार कोई नोटिफिकेशन आया, अगेन योर अटेंशन गेट्स शिफ्टेड. एंड यू नो क्या होता है कि आपको पता है कि यार मैं अभी बैठी हूँ, मुझे तो शाम तक आई हैव टू सिट एंड स्टडी, तो आई एम अलाउड टू वॉन्डर हियर एंड देयर, मेरा माइंड वॉन्डर भी होगा तो चलेगा. लेकिन यहाँ पे जब आप 25 मिनट्स के लिए बैठोगे तो योर माइंड इज ट्रेन कि आई हैव ओनली गॉट 25 मिनट्स, बिकॉज 25 मिनट्स तो ऐसे निकल जाते हैं. आई हैव गॉट ओनली 25 मिनट्स एंड मुझे 25 मिनट्स 100% देना है, एंड योर ब्रेन इज ऑल्सो एक्टिव बिकॉज 25 मिनट्स का अटेंशन स्पैन है आपके पास. सो इट वर्क्स superbly if used correctly. All right. So different apps I see nowadays, time management ke, self discipline ke, are those useful? Should people go for it or no? I'm sure they are useful. I don't use any app for myself, but a couple of things that I can help in. If you want to use an app, there might be a couple of them. But if not, I would recommend कि आप एक to-do list बना लो. It can be on your phone. It can be on a piece of paper where you can see it. Okay. Now जो to-do list आप बनाते हो, usually try to make it one evening prior. मतलब कल का है तो आज रात को, जैसे आपने बोला, आप बनाते हो. Okay. So आप एक दिन पहले बना दो. And prioritize your task. मतलब जो सबसे important है. Okay. And then least important. वैसे आप. And as you complete your task, एक cancel out कर लो. Because वो एक बहुत ही important factor है for ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन के मैंने कंप्लीट किया है. एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शमाइजा इज दैट आप अपने आप को मोटिवेशन दो, रिवॉर्ड दो आफ्टर कंप्लीटिंग टास्क. तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड कैंसलिंग इट आउट, दैट टू डू लिस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट गिव्स अ मैसेज टू योर सबकॉन्शियस दैट आई हैव अचीव्ड इट. आपने कंप्लीशन किया है तो आपको अचीवमेंट, मुझे मिशन कंप्लीटेड वाला फील आता है व्हेनेवर आई डू इट. यस, सो दैट फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ड्रिवन रहो, आप मोटिवेटेड रहो, आप करते रहो वो चीज़. मतलब एक हम बच्चा कोई चीज़ करता है, सो हम लोग बहुत बार उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो हैप्पी हो जाते हैं. सो ये सेल्फ मोटिवेशन ऐसे होता है, लाइक डूइंग इट योरसेल्फ, लाइक कैंसलिंग इट आउट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो Sakina, how can NLP techniques help in not procrastinating? Also, how does it help in reviving the mind? So NLP as a tool, it deals with the subconscious mind. I think we all know that by now. And procrastination is about emotion management. So yes. So generally इसको treat करने के लिए कितने sessions चाहिए होते हैं? If you are treating it? See, हर इंसान का background अलग है. When I say background, I'm not talking about family background. I'm talking about इमोशनल बैगेज. आई एम टॉकिंग अबाउट एक सर्टन पैटर्न्स, एक सर्टन स्ट्रक्चर वो लोग एक फॉलो करते हैं. एंड क्यों करते हैं, वो एक पर्सनलाइज सेशन होगा. एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट, सो इट वेरीज. समटाइम्स एक सेशन में भी हो जाता है. लॉट ऑफ टाइम्स इट टेक्स अबाउट 3 to 5 सेशंस. एंड देन there's some people who have gone through a lot of traumatic experiences लाइफ में, तो उसके लिए we need a little more sessions depending on the the depending on the trauma. condition of the person. Yes, we decide that. Okay, so back to that is so that is when we talk about one-to-one counseling जो करते हैं उसमें आ जाता है. Now अगर हम लोग NLP की बात करते हैं for procrastination especially, तो
most few things हम जो NLP is like known for is पॉजिटिव विजुअलाइजेशन जो होता है, जो हम आँख बंद करके एक चीज़ विजुअलाइज करते हैं, उसमें ऑफ कोर्स एक फॉर्मेट होता है उसका, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो आपको अगर कोई भी टास्क करना है, लेट्स अगेन टॉक अबाउट अ टास्क लाइक यू गिव मी अ टास्क, आप बोलो कौन सा टास्क. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग आउट फॉर अ मूवी and then we delayed it for some reason. But movie will not be a task because that's enjoyment, fun. Okay, for enjoyment. I'm saying Prepare down a question list for a next podcast. Okay, ठीक है. सो अगर आपको एक नेक्स्ट यू वांट टू एक पॉडकास्ट करना है, आपको पता है किसके साथ करना है, लेकिन आप क्वेश्चंस ही नहीं कर पा रहे हो और उसकी वजह से वो पूरा पॉडकास्ट डिले हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट आपको विजुलाइज करना है कि आप वो व्हेन यू सिट टू विजुलाइज, आपको बैठना है, आंखें बंद करनी है, स्टार्टिंग अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, ओके, एंड सेंटर योरसेल्फ, ओके, प्रेजेंट मोमेंट में आना है. फिर आपको विजुलाइज करना है कि आप वो पॉडकास्ट किसके साथ कर रहे हो, जिसके साथ आप ABC इंसान के साथ करना चाहते हो. विजुलाइज करो कि आप क्वेश्चन आंसर मोड में हो, यू आर आस्किंग योर क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर विजुलाइजेशन इज फीलिंग. आपको सब सेंसेस यूज़ करने हैं, आपको विजुअल्स यूज़ करने हैं, यू शुड बी एबल टू हियर योरसेल्फ, आपको यू शुड बी एबल टू try to smell whatever you can. We should use all the senses. And then once you visualize that, आपको और एक बहुत important visualize करना है कि how are you feeling after the podcast. Podcast successfully complete हो गया, आपको कौन सा feeling आता है, what type of feeling of achievement. Again I said मेरे लिए जब कोई भी मेरा to do task complete होता है ना, मिशन कंप्लीटेड वाला, yes, गेम ओवर वाला, यस, राइट. सो वो आपको फीलिंग इनकलकेट करना है वो विजुलाइजेशन में, कि अगर मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि आपने ABC इंसान के साथ किया पॉडकास्ट, पूरा पॉडकास्ट हो गया, आप विजुलाइज कर रहे हो, ये सब सोच रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो. इमेजिनेशन इज नॉट विजुलाइजेशन, दिस इज प्रोडक्टिव विजुलाइजेशन. तो और फिर आपको इमेजिन करना है कि पॉडकास्ट फिनिश हो गया, वो गेस्ट आपका चला गया, आपका जो फीलिंग है, आपको व्हाट आर यू अचीविंग बाय डूइंग इट, आपका जो मोटिवेशन है बिहाइंड दैट एंटायर कॉन्सेप्ट, आप वो मोटिवेशन को आप होल्ड करो विजुलाइजेशन में. एंड हाउ आर यू फीलिंग कंप्लीशन ऑफ द टास्क में, हाउ डू यू फील. तो ये विजुलाइजेशन, टास्क इज स्मॉल और अ बिग. यस, मेरे लिए स्मॉल टास्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बिग इम्पोर्टेंट. यस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आई गेस फॉर पीपल. क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू फोकस ऑन बिग थिंग्स एंड इग्नोर द स्मॉल टास्क, और वो इग्नोरेंस की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती थी. सो देन व्हेन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्मॉल टास्क्स, वो completing that major one was easy for me. Yes. So I don't know whether it is if it works for you. Usually हम ऐसे बोलते हैं even for corporates and all कि आप segregate the task उसके हिसाब से, मतलब जो सेम टास्क, सिमिलर टास्क है, पहले वो मतलब पूरा वो segregate कर लो. मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर चलो छोटा है ना तो वो पहले कंप्लीट कर लेते तो वो एक टास्क हो जाएगा, एंड देन विल शिफ्ट टू द बिगर वंस. यस, मेनी पीपल थिंक कि पहले बिग टास्क फिनिश कर लेते हैं तो स्मॉलर टास्क इजी होगा, एनर्जी एंड ऑफ द डे कम होती है, तो पहले मॉर्निंग में हेवियर टास्क कर लेते हैं. बट जो आपके लिए वर्क कर, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, जो आपके लिए वर्क करता है शायद वो किसी और के लिए ना वर्क करे, एंड वाइस वर्सा. तो आपके लिए जो वर्क करता है, यू हैव टू प्ले एंड मैच. सो वो एक चीज़ है. वन इज प्रायोरिटाइजिंग अ टास्क, ओके. सेकेंड, फर्स्ट इज विजुलाइजेशन, सेकेंड इज प्रायोरिटाइजिंग अ टास्क, थर्ड इज टू अंडरस्टैंड द वाई फैक्टर, कि मैं क्यों कर रही हूँ ये. ओके, सो इवन इफ इट्स अ सिंपल थिंग लाइक रीडिंग अ बुक, व्हाई डू यू वांट टू रीड अ बुक? बिकॉज यू वांट टू बी मोर अवेयर, आपको, या फिर आप अपना वोकैबुलरी बेटर करना चाहते हो, या फिर आप एक अच्छा हैबिट आपके लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना चाहते हो, या हॉबी भी हो सकती है. या सो दैट व्हाई हैज टू बी क्लियर. ओके, सो योर व्हाई हैज टू बी क्लियर, योर segregating of your items have to be clear, your visualization has to be clear. एंड एक अफर्मेशन जो विजुलाइजेशन में आप डाल सकते हो, या फिर whenever आप जो बैठ जाते हो चेयर पे या बेड के ऊपर और आपको लगता है कि अगेन कमिंग बैक टू अ प्रीवियस एग्जांपल ऑफ क्लीनिंग अ वार्डरोब, नहीं होगा यार आज, तो आपके माइंड को एक NLP में एंकरिंग होता है, समथिंग कॉल्ड एज एंकरिंग इज लाइक, इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, बट इफ पीपल हु नो दे विल नो. एंकरिंग इज वन यूनिक like action to your body,
unique signal to your body which triggers you कि ये trigger होगा तो मैं ये करूँगी. So it's like a, for example, you kind of like pinch yourself or just like clap 3 times or some signal to your body and you say it, do it now, do it now, do it now, जो भी है. एंड वो आपके माइंड को ट्रेन करता है. लाइक एग्जाम्पल, जब डोरबेल रिंग करता है, इट गिव्स यू अ सिग्नल टू गो एंड ओपन द डोर. You will not sit in one place unless you're ill. You will not open the door when you're ill or you can't get out of bed. But agar, what is a doorbell? Nobody is telling you chalo aao doorbell kholo. No, I mean darwaza kholo. It is a signal. It's a conditioning you have done to your body that doorbell है मतलब ये. बच्चा रोएगा, condition of your mother is के बच्चा रो रहा है मतलब बच्चा is hungry. So these are all conditionings. Okay. So you have to condition your mind. वो anchor एक डालना है आपके system के अंदर. And you have to create this. Do it now. It's better to start than never start. Maybe it is badly started. आप आधा करो लेकिन start करो, because आप जो rhythm में आ जाते हो ना, you'll continue to do it. तो do it now, do it now, do it now. Continuously hit yourself with those now, till the time you're like, okay, bus, now I'm doing it. Yeah, do it now. Do it now. You have to just go on saying it. Do it now, do it now, do it now. चलो सकीना, do it now. All is well वाला था. Yes, same. That was also motivating. और वो real life में भी वो try किया है मैंने. It worked. It is magic. It is NLP by itself. हाँ. You say, मतलब you trick your mind. आपके mind को पता नहीं है what is right, what is wrong. वो तो हम लोग सोचते हैं, overthink करते हैं. Trick your mind. You have to play with your mind. Your mind is the powerhouse. You trick your mind that you can do it. You trick your mind, ये already achieve हो चुका है, वो achieve हो जाएगा. Law of attraction when we talk of. So yeah, do it now, do it now, do it now, do it now. Get up, do it. So that's a very important thing. Okay. So Sakina, how to deal with procrastination, especially when it is related to past relationship or past relationship trauma? जैसे for example, you have had a relationship in the past, or in present you have accepted it that so and so person is not in your life. You are living a good life, but still that trigger is still there in your mind, and because of which you are not able to continue with your life. और फिर अभी वो overcome नहीं कर पा रहे हो आप for some reason. Okay, so I think losing of someone in the form of death or broken relationships, broken friendships is one of the most traumatizing experiences for any human. Okay, लेकिन हम अपने आप को हमको टाइम देना है to heal. Trying to act कि it has not affected you is rubbish. Okay? तो आपको अपने आप को टाइम देना है. वो टाइम, वो healing टाइम के अंदर आप procrastinate कर रहे हैं तो I'll still not term it as procrastination, because you're healing, and healing can never be termed as procrastination. Okay. अगर आप कोई टास्क नहीं कर रहे हो because you're healing, you are given the license to not do it. But कितना टाइम? For a couple of days, couple of weeks, and then there is a pain which will always be there. But your body and your mind, वो अपने आप सिखा देते हैं कि you have to live on. Okay? So बहुत लोग नहीं करते हैं कुछ चीज़ें because उनको लगता है कि अगर for example किसी के पेरेंट्स का डेथ हो गया है फैमिली में, and they feel कि अगर now if I continue with my life even after 1 month, I will be proving that मैं मेरे पेरेंट्स को इनफ प्यार नहीं करती हूँ. लोग सोचेंगे कि आई एम नॉट इनफ, आई वॉज नॉट अ गुड चाइल्ड. सो दे हैव दिस माइंडसेट कि पीपल थिंक के मतलब आई हैव मूव्ड ऑन. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेन हमेशा रहेगा. वो एक वैक्यूम एक इंसान का रहेगा. राइट. वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो आवर लाइफ, कंटिन्यू आवर लाइफ with that pain. So the pain how minimizes. To get rid of that pain. Yeah. It minimizes with time. Time is the best healer. लेकिन आपको टाइम के साथ क्या करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है. Right. अगर if somebody is injured, आपको अगर बर्न है कहीं और आप वही बर्न पे you know like घिसोफाई some other things, तो वो बर्न कभी भी होगा, that scar will never heal. It will be there. बट अगर आप वो स्कार को टाइम दोगे, ओके फाइन, हील इट, यू नो, ट्रीट इट, मेडिकेट इट,
तो वो heal होगा. So what you do with your time is also important. You want to cry, cry it out. But don't do things which will deepen your scar. Don't self-harm. Don't harm others around you. Don't go into negative thoughts. Cry karna hai, you know, again, as I said, I always say that if you want to cry, cry it out. How you deal with it, it's your choice. If you don't know how to deal with it, we are there. We are professionals to help you. You can always reach out. But you have to have a mental timeline sometimes, you know, okay, fine, you know, now I need to come out of it and move on. And then once you move on, I will not call it as procrastination. लेकिन उसके बहुत time हो गया and still you're not able to move on, then you might need to see a professional, and then we try to work out कि how has it affected you and how traumatized are you अब तक. Because sometimes क्या होता है, even if you move on, that it is there in the back of your mind. Yes, it is. Though it is not affecting your current life, yeah. because you are that strong mentally and you have trained your mind to be that. Yes. Okay, this is what the reality is and this is I have accepted, this is I am living in. But sometimes when it triggers your mind and, you know, it gives an alarm to your mind and it's disturbing kind of sometimes. No, but there are times अगर आप fully heal भी हो चुके हो किसी के loss के like death या फिर broken relationship के, वो एक flashes आते हैं. Because normally youngsters, teenagers ये चीजें face कर रहे हैं. Yeah, but वो flashes आएंगे. Like there will be you're completely healed, आप अपनी life अच्छे से जी रहे हो, continue कर रहे हो, you're working, doing everything. But there will be times अचानक से वो एक flash आ जाएगा वो इंसान का. You know, like it could be a death of a person or again a broken relationship, and it is okay because हमारे पास एक switch on switch off का button है ही नहीं. We are humans. Yes. Okay, so it is okay as long as you take it as a passing thought. या फिर एक, you know, music होता है या फिर एक movie होता है या फिर एक कुछ होता है जिसकी वजह से आपको वो इंसान की याद आ जाएगी, and it is normal. It is fine. Because you cannot completely delete something from you your cannot. life which you have been a part of. Absolutely. You can diffuse it. आप उसका जो ये है sorry, I'm not getting the word. Memory को blur करना kind of. नहीं, memory blur नहीं, जो उसका effect है उसको हम minimize कर सकते हैं. उसका जो impact है उसको हम minimize कर सकते हैं, blur कर सकते हैं, लेकिन it will still be there. But somewhere again, in give your it a mind. time wala Yeah, case give hai. it time and slowly we move on, yaar. We move on. We all go through losses in life, which maybe few people, you know, talk about it, few people don't. Everybody has their own coping mechanisms. All right. So, Sakina, we would go with a rapid fire round. Yes. Just for fun. Yeah. Okay. So, you have to answer as quickly as possible. I'll try. What is your most useless talent? Oh my God. Useless talent. अगर वो useless है तो talent कैसे हुआ? I mean, you can do something, but you're not doing it. Oh my God. I don't know. It can be a hobby also. Some of the hobbies. I think I can run more awareness sessions. Okay. And I think I have it in me in terms of knowledge and everything. But maybe I'm not utilizing my awareness and knowledge. So you're procrastinating. No, I'm not procrastinating. I am. Just kidding, guys. No, I'm. You मेरे against चला जाएगा. No, it is about I think prioritizing things in life, and I think I will probably do it at some point. All the best for that. So, are you a coffee or a tea person? I am a coffee person. I'm a tea. I like a tea in the morning, but I'm very particular. I'm a little specific about tea. So I like मेरे हाथ का चाय या फिर वो typical ईरानी वाला चाय. मुझे normal चाय पसंद नहीं है. Fancy teas I don't like. That's the reason I prefer coffee. All right. So are you a night owl or a morning bird? Night owl, completely. Night owl, same here. Oh my God. Night owl. I feel so energized and awakened and full of energy, Yeah, power-packed right. performance I can give in the night. Oh my God, that sounds so I am not in that term. Oh, it sounded in the other way. I can give a Okay, power. okay. ये अपना पूरा censored हो जाएगा. Yeah, it sounded in the other Oh my way. God, with the expressions and everything. Yeah, with the expression. But I didn't mean that actually. Of course you didn't mean. मुझे ऐसा लगता है
कि जब सब लोग सो रहे हैं, हाँ, अभी बच्चे सो रहे हैं, पूरा घर सोया है, नाउ आई हैव द फ्रीडम टू, ओके मैं शांति से कर सकती हूँ जो मुझे करना है. right. Then maybe whether it is editing my stuff or having a cup of coffee, sitting in my balcony आराम से, but okay doing Yes, it, तो yes. वो एक energy आती है रात Right. को. I agree because I like the calm at night. हाँ, I exactly. like it when everybody is off to bed. So exactly मेरा मतलब वही था. Yeah. No, so I like that calm because I know that I'm not needed. You know, at times you don't want to be needed. And also sometimes people ask me, तू क्यों जागती है इतना रात को? Exactly, रात right? होते ही नींद उड़ जाती है, no matter how much ever tired you are. Yes. मैं पूरा दिन काम की हूँ, फिर भी रात होते ही एक एनर्जी आ जाती है और सारी थकन एक कॉफी के कप से उतर जाती है. Yeah. And then again you become an owl. No, for me it is the moment everybody is off to I think bed. सारे पुणे वाले को ये प्रॉब्लम है. Maybe, I don't know. Like, We find that majorly I have like seen there is this. nothing, the lights are switched off. I'm watching maybe, I'm just doing a Netflix and chill. Or I don't know, I just like to be all by myself. I feel that, you know, like relax. I like to do some self-care. You know, like skincare and all of that I do at night. And so I feel like that's my self-recovery or self-healing process at night. So yeah, because the day demands so much out of you, right? Actually. So yeah. Okay, have you ever been to a live concert? Yeah, I have. How was it? Oh, amazing. Would you like to share? So I've been for A.R. Rahman's. Wow. Yeah, and it was. I don't think I have the adjectives to describe how that goosebumps wala feeling jo hota hai, amazing. And he by itself, he's like, I think, a magician in music. So amazing. And then there was a friend's sister's wedding, and then we had the Guru Randhawa performance. Even it was electrifying. But of course, two performances side by side. A.R. Rahman is like more elevating and you know zen. The Sufi side पे ज़्यादा है उनका. हाँ. It's like there's magic in his voice. So you being into training mind and reading different minds in a day, how do you keep yourself motivated? Like I you're think on to go. yes. So NLP has helped me a lot. And then every time when you repeat something, so when I train people on NLP, I am repeating it like end to end, like a lot of times. So it is like a reminder for me by itself. So the more, and this is also very important, procrastination. If you want to do something, tell someone that I'm going to do it. तो आपको एक ये मिल जाता है, किसी को मैंने बोला है, मतलब I have to complete it. So वो वाला feeling. So when I train people on NLP, it's like a self reminder for me to, oh, these are the things you're supposed to do and these are the things you should be avoiding. So training the mind is very important by repetition. Secondly is that I have also had my share of lows in my life. And I think a person will only know a flavor of a high when they have the flavor of the low. Low. So I know how it feels there. So I don't want to go on that path again. So I rather choose this than choose that. Alright. So yeah. So what would you do with $1 million? Okay. I would invest in. I think for investment, I'll give a part of it to my husband because he's best at investment things. And I would, of course, I would want to do something for the underprivileged children. Because Very every nice. time when I'm driving around and I see a child, you know, begging on the Begging road on and the they being road. shooed off by people, it kind of, my heart cringes. My heart, somewhere, a part of my heart cries every time. And I sometimes feel that I want to give them a little cash in the hand, but I know that I'm spoiling them. Yeah. So then then maybe, you know, I just give them some food or, you know, buy some food. But then a part of, I think that emotion stays with me. It lingers for you know, some time, for a few moments. Yeah. So yeah, for something for the underprivileged. So which TV show would you love to be featured in? For me, it would be Big Boss, if you ask me. My God. I would like to go and fight. I like watching Big Boss, honestly. And people who know me, It's they one know of that my favorite and people reality actually demean, like, Big Boss कौन देखता है? पागल है क्या? कौन देखता है shows. Big A lot of Boss? people say that. But you know why I like watching Big Boss is because they are their true selves. Real personality. And I love reading personalities and I like how people behave in certain ways. So it's a teaching, a human experience by itself. So
But no, I would not want to go in Big Boss. If given a chance, I would still prefer Khatron Ke Khiladi. Oh, I okay, would, okay, I okay. think, yeah, I have that Challenging one. adventurous side in me. So yeah, I think If you could travel the world for free, yes. where would you go first? Okay. I want to go to. I have a. I see a couple of places that I want to visit. I want to visit the Bora Bora Island. Bora Bora Island. Where Huh. is this? It is. It's in France, I think. So yeah, I would like to visit the Bora Bora Island. So if you had to describe your job using a movie title, what would it be? Movie title, my job, Jab We Met. Jab We Met. Wow. Yeah, that's because I resonate a lot with that character, not because she's fearless, but because she takes accountability of her choices in life. If you could choose your office view or a home view, window view, which view would you like to choose? Mountains and valleys. मजा आ रहा है rapid fire में? Yes, loving it. So if you could have any superpower to use at work, what would it be? Reading people's minds, because I can read their behaviors, I can read almost facial expressions, I can gauge, break down kar sakti hu. Reading minds, I think, yeah. Because of course you are into minds only. Yeah. So what is the weirdest rumor that you have heard about yourself? There are so many. There are so many. Yeah, there are so many. I don't know. I wouldn't want to say There are so many. Then at least you should have say one. rumor. Oh. So I think heard a lot of rumors of myself when I was back in Pune. Not now, not when I'm now here, but when I was back in Pune, yeah, I think a lot of them. How many times have you gone to work without taking a bath? Oh my god. Oh. Maybe a couple of times because. Oh my god, I don't know. Yeah. But I am a very hygienic person that way in terms of I have this cleanliness. I'm a cleanliness freak, so maybe a couple of times, yeah. But there have been some days I may have gone. I don't remember how many, but yeah. Okay. But I always smell good though. Yeah, that is very important. If you could choose, so this is the last one. Yeah. If you could choose your boss, whom would you choose and why? Wow, I would love a boss like Shah Rukh Khan. Oh, wow. I'll tell you why. Because the way he respects women, I don't think Yes. anyone under the sun whom I know of, even I a hope celebrity. Shahrukh Khan tak hamara ye Wow, podcast seriously. पहुंचे. His approach to women, his mindset about women, he is amazing, amazing. That ek lehza, to talk with women. It's amazing. I would love to have a boss like him. I don't have a boss. I think I'm my own boss. So are you but saying this out of crush or genuinely because of the respect he No, shows? I used to have a crush when I was small, but now I don't think I have a crush on Shah Rukh Khan. तो current crush कौन है आपका? Current, no, it's been there while. since a couple of years. So I am a hardcore fan of this series called The Vampire Diaries, and usme there's a character called Demon Salvatore, and his real name is Ian, and I really, really adore him. Okay, देखना पड़ेगा. Yeah, I don't know. he is, and also because of course he's got very good acting skills and all, and somewhere he reminds me of Shah Rukh Khan for some reason. So yeah. Shah Rukh Khan is not gone. Shah Rukh Khan is not a crush anymore. He's like more like a respect, and like I look up to him, and like real time achievement किसी ने किया है. क्या सवाल पूछा? Sakina's husband, I hope he's watching this. He knows it. He knows that I really like him. And also, I like Fawad Khan. I find him very good looking with that, personality he has. Fawad Khan from Khoobsurat, Sonam Kapoor wala. Okay. Now I got that. His personality is like he's so gathered and एक बहुत ही एक ठहराव सा personality है उसमें. So I like him. Okay, Sakina, it was really fun talking to you. Yes. So, do you have anything to ask me at the end of the episode? How do you have so much energy in you? And
patience to talk about so many different variety of topics. Initially I didn't. You watch my previous podcast. I used to interrupt the guests. मतलब मुझे इतना बोलना होता था कि मैं सामने वाले को बोलने ही नहीं देती थी. When I take public poll ना, everybody is like, तू कितना बोलती है? You have to stop. जो गेस्ट आया है उसको चांस उसको दो. बोलने दो and you become a good listener. So वो slowly I started to give my mind a reminder कि नहीं, I have to be a good listener. Yeah. क्वेश्चन पूछने के लिए भी अगर if I am listening to that person then only I'll be able to ask question. नहीं, and also good listener is to be a good listener is a very important skill or quality even in good relationships. Because हमको क्वेश्चन सुनने के पहले आंसर दे देना है. Exactly. या फिर हम लोग बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं खुद आंसर देने के लिए. Because ये right from my childhood I am in that, मतलब that is in my personality कि मैं या तो ओवर रिएक्ट कर देती हूँ या तो बहुत ज़्यादा anxious हो जाती हूँ. Yeah. So maybe I think that is in my personality or what, but yeah, I am working on it. I have I think also slowed it down comes a bit. lot with your job profile. So because you are into that kind of a mode of, you are like, I think you also take workshops and you are the one who's always talking, who is at the I am one of the stage. jolly personalities. Like अगर मैं आपके साथ बैठी हूँ over a coffee, मैं चुप नहीं बैठ सकती. हाँ. कंटिन्यूसली मैं कुछ ना कुछ आपसे बात करूंगी या कुछ डिस्कस करूंगी, कुछ शेयर करूंगी. सो मैं चुप नहीं बैठ सकती. मेरा ये Yes. प्रॉब्लम है. इट्स नॉट बिकॉज मुझे चुप बैठना नहीं है. इट्स बिकॉज आई हैव सो मच टू टॉक. Which is good. I mean, no one can really get bored with you. मे बी वो maybe Yeah, but मेरी a lot of company people get bored with a lot of talking also. Depends. एग्जैक्टली ये भी हो सकता है कि मैं तो बोल ही जा रही हूँ बट पता नहीं सामने सामने वाला वाले को वो अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है. True. सो आई हैव वर्कड ऑन दैट एंड नाउ आप पहले के एपिसोड्स देखो और अभी के एपिसोड्स देखो. सो आई हैव बीन कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन माई सेल्फ. Which is good. Improvement in every. Yeah. I think And tomorrow you have to do better than I have tomorrow today. always taken public review, whether it is good or bad. I have always taken it that okay, if there is a negative review, I have to work on Feedback. it and make myself better. Yes, feedback is Yeah, important. so I've always taken negative feedbacks also in a very good way. Okay. Whether it is coming from her or whether it is coming from anybody. So the thing about feedback is that it is there क्योंकि for a हम ये purpose. शो लोगों के लिए ही तो बना रहे हैं. Right. और जब right. उनको ही पसंद नहीं आएगा तो फिर what is the point of making I out agree. of it? No, but it's a great job that you're doing, and I think learning every day and unlearning is very important. जो हमने सीखा है उसको unlearn करना भी बहुत important होता है. And मेरे प्रोफेशन में also it happens, Sakina, that I meet new people every day. Yes. Dealing with new minds, creating new looks. तो वो creativity का level इतना high होता है in my mind कि मुझे कुछ नया create करके, every bride comes with a, or Different every expectation. model or every shoot what I do comes with a different expectation, different challenge. तो वो creativity का level high होता है ना mind में, तो वो इस तरह से affect करता है. No, and when you are in a creatives, I think field, you have to have your mind open at all times. You can't have कि ऐसा ही है और ऐसा ही है. You have to have the ability to adjust according And to. I am that personality कि मुझे आप bind करोगे ना तो I would not like it. Like for example, if you ask me to behave in a certain way or sit in a certain way or talk in a certain way, तो I would feel myself suffocated and Yes. pressurized. Yes. I always love to be who I am, but always that's not always the thing कि लोग आपको accept करे जैसे आप हो. But I always like to be who I am rather than but that is, pretending to be someone but else. that is important. So what happens is that pressure of behaving in a particular way Yes. ताकि लोग मुझे पसंद करे, वो मुझे नहीं चाहिए मेरी लाइफ में. So this feeling of being liked, the feeling of wanting to be liked by people is the biggest lie you can live in. It Exactly. is the biggest lie and the biggest manipulation or manipulative world that you can live in, because आप हो ही नहीं जो आप जो हो आप वो हो ही नहीं. What you're trying to be is दूसरे के standards के हिसाब से. You Match use a certain करना. brands, you dress up in a certain way, you'll do your hair in a certain way. I don't believe in brands.
I mean, Initially, I was a brand conscious person when I was in my teenage, when I was in my college also. You know, Yeah. particular brand ki hi perfume I'm going to use, jeans. But lately, I realized ki it is just a waste I of mean, money. I feel You like it anything, is, you yes. just buy it. Yes. As far as it is making you happy, brand doesn't Yes, matter. I think if it's making you happy, I think it's fine. But if you're doing it because somebody else has it and you want to have that status symbol, then it I is think you should kind of sit and reflect, why do you want to do that? And the term I mentioned, कि I'm working on myself in improving, I think that is also because somewhere I also feel when I watch my own episode कि अच्छा यहाँ mistake है और Improvement ये की मुझे जरूरत- improve करना But है. I'm sure कि nobody is perfect. Again, perfectionism is a bimari. The moment you think that I need to be perfect is a bimari. You need help. Yes. You need help. Simple as that. अगर आप because वो चीज अगर आपका mindset है तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे. You'll never be able to begin. Even if you begin, you'll kind of never be happy and satisfied with it. And you put that pressure on जैसे to I other always people tell also. my students, don't think that आप अगर मेकअप कर रहे हो या इसी फील्ड में या whatever XYZ फील्ड यू आर इन, डोंट थिंक योरसेल्फ कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब सीख लिया. दैट इज रॉन्ग. Yes. ऑलवेज keep your There mind is open always going to be to room for learn. improvement because nobody is perfect. यार हम लोग what I am today, I'm sure I can be a better person tomorrow. Of course. Maybe I can talk better. Maybe I can deliver better. Of course. You can be better. Everybody. And जब हमको लगता है कि बस ये पहुंच गए हम, उसके आगे क्या? इसके आगे क्या? So thank you Sakina for joining me again today. हमारा previous एक episode है NLP वाला, अगर वो भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, जिसमें सकीना ने child behavior और parenting के बारे में बात की है. And I think it can be very useful one for all of you. Thank you so much, Shamiza, for having me yet again. And it is always You a were pleasure. so wonderful that I had to have you again. No, I'm glad that you had me again, and I love to be of help to people, to the masses who need it. And yes, thank you so Thank much. you so Always a much. pleasure to Yeah. have a conversation. It's always so much fun with you. Thank you so much, and thanks to all of you for hearing out on us. Yes, For thank you so much. such a long time. And मैं आपसे मिलूंगी another episode में. Till then, you know what you got to do. Like, share and subscribe.